Good morning, everyone. We warmly welcome all of you to our special program on the occasion of Children's Day 2022. The world is made more playful, more colorful, more joyful, and more purposeful by our children. When children become a part of the community, the way of thinking and living often transforms. Because now it is no longer a life being lived only for oneself, but a little life which is being brought up as well. More often than not, a young one's questions often compel us to rethink our perceptions and review our understanding. अक्सर बच्चों के प्रश्न हमें अपनी धारणाओं पर पूर्ण विचार करने और अपनी समझ की समीक्षा करने के लिए मजबूर करते हैं। फिर भी बच्चे जो भी कुछ करते हैं वह बहुत खुशी और सहजता के साथ करते हैं, अच्छे इरादों और सफलता के साथ करते हैं। हम अपने आसपास के बच्चों से जीवन जीने का तरीका बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं। It is this spirit of childhood that we seek to celebrate here today as we invite Dr. Nilay Ranjan, the head of CSR and sustainability at V, to begin the program with the welcome note. Good morning and welcome all. Happy Children's Day. And every year we celebrate the Children's Day for the welfare of the children to make that our children are safe and happy where they are. And starting from the 14th November, after the first Prime Minister birthday, Pandit Jawaharlal Nehru, fondly known as Chacha Nehru, we envisaged that all the children in this country should be happy and the welfare should be take care of that. And after that, the culture was that every government, every prime minister, everybody wanted the children should be take care of that properly. And through that, all the children are near and dear to us, as Ali said that it at the home, the school, and the society levels. We are doing multiple activity to help them, and that's why we're celebrating that. First of all, I also wanted to welcome all our dignitaries today, Mr. P. Balaji, who is the director of the foundations, Mr. Anurag Mallu, who was happy to participate today, and Mr. Mukesh Khanna is joining today at these occasions, and all the children who are joining from different locations for the young achievers on this today, Children's Day. VI foundations take various initiatives to ensure access to the quality educations by creating improve infrastructures, convert into the smart schools, extend the scholarships, establishing model schools, community learning centers. We are doing a multiple initiatives to ensure that the children in the schools should be happy. In the last 2 years, due to the pandemics, the life of the children has changed. The children have to stay at the home. They're missing the schools. Thanks to technology and thanks to the company like the Vodafone Foundations who believe in that, bringing technology which can accelerate the development and bring access to the everyone. We have online schools. We don't lose our 2 years, but of course we lose happiness at the school where we stay, connect with the children, our peers, and play. This year is a good year because every children are back to the schools and they're celebrating the Children's Day in the school with the teacher, watching us also in the school through the mobile phone or through the digital mode. So still the technology is relevant despite pandemic is over to connect, to say, to communicate to the children. This year, the theme of the Children's Day is Happy Children Make a Nation Happy. Given the right opportunity, children will thrive and to be model citizens of the future. The children's happiness is a factor that is heavily influenced by their environment, involving community, their schools, and the parents. Our initiatives aim at all these, which have a bearing on the children's lives. Today, on the occasion of Children's Day, we are also releasing the second editions of the Veer Ki Kahaniya, the story of children who have found happiness thanks to the positive impact of VI initiative. We would also be recognizing some children who have excelled in the field of education, sports, and other curricular activity. I would like to thank once again to all the dignitaries who have joined today and the children and my colleagues who have joined today. Over to you, Sally. Thank you, Dr. Ranjan. Thank you for welcoming our guest and audience to the Children's Day special program.
With several programs aimed at partnering with schools for a better classroom experience for students, VI's presence has deepened in the education sector under the visionary guidance of Mr. P. Balaji, Director V Foundation, and Chief Regulatory and Corporate Affairs Officer V. We would like to invite Mr. Balaji to give the inaugural address. Mr. Balaji is a member of the core leadership team of Vodafone Idea Limited. He leads the company's regulatory, public policy, and government relations activities, along with industry advocacy, corporate communications, reputation management, and CSR. Balaji sir is an electronics and communications engineer from IIT Roorkee and has completed his MBA from IIM Ahmedabad in marketing, finance, and strategy. A very warm welcome to you, sir. Thank you so much, Ellie. And I think, as Nile has done before me, a very, very good morning to all the children and ladies and gentlemen that have joined us today. Thank you for being with us on an occasion that we celebrate the child in each one of us. Uh, it's those memories of childhood and school days that obviously are very dear to all of us. My own school is celebrating its 100th centenary year, so to say, and I'm sure each one of us long for that phase of our life where it's where you're learning and when you are kind of making friends for life. And I think that child in us has to be kept nurtured at all times because that's really the one thing that keeps us going ahead in life. I take this opportunity to welcome our chief guest, Mr. Mukesh Khanna, who's a talk show and host and actor. We all know him for his wonderful portrayal as the first superhero from India, Shaktiman, and also Bhishma in Mahabharat. I'd also like to invite a very inspiring gentleman, Mr. Anurag Mallu, who's an entrepreneur, a mountaineer, and a global advocate for the United Nations Sustainable Development Group. So I think fantastic speakers to basically share their experiences and actually energize our children who joined this particular conference today. Uh, I'm sure that our children will be very excited to hear from our Shaktiman as well as from Mr. Anurag Mallu. Today, Children's Day, we would just like to also reflect a little bit on the 2 to 3 years tough times that we all went through across the world. Uh, Really, I think uh, the children were connected, surely, but were they happy? Perhaps not, because obviously, they were away from their friends and their beloved school and the activities that they would do outside of school as well. Uh, some children during this time were even denied access to schools because their parents lost livelihoods. Many children went through anxiety, stress, depression. Some of them also missed some of their key development milestones, and it's natural that such a thing would happen. I think, as Nile said, in Vodafone Idea Foundation, we are keenly committed to using technology for good and to fill the gaps as much as possible. What we did was, during this period, uh, we ensured that our children stayed connected, uh, and particularly children from rural and underprivileged backgrounds were not disadvantaged. Um, while we have a focus on other areas such as agriculture, women empowerment, and livelihood generation, but education has been a very, very strong focus area for us as a foundation and as also a technology company, that we believe that we have the opportunity to empower people and citizens across the country. Through our technology initiatives, we have actually been able to positively impact the lives of thousands of families and communities across the world, across the country. Specifically, if I were to talk about our financial literacy program, Jadu Ginnika, we have built the capacity of 2 points. We've about nearly 10 million and more have been actually positively impacted by this program. When we look at our education programs, then we have positively impacted the lives of about 2.7 lakh children, teachers, and also impacted the lives positively of 16 lakh students through our Jigyasa platform.
The digital education that we have been able to impart through partners to our teachers has enabled the creation of 60,000 digital content, which are helping so many children across the country. The fact that we could also, during the time of the pandemic, ensure that children stayed connected to the education system through our Guru Shala program meant that they could also stay, at par with the more privileged children, as well as to make sure that they were connected with each other and their teachers. Um, we also focused on providing scholarships to needy children, and it also allowed for them to basically have the necessary resources for learning and teaching for the teachers. We were in recent weeks fortunate to host Honorable Shri Prime Minister Shri Narendra Modi ji at the India Mobile Congress 2022, where he launched 5G services at the national level. He had the opportunity to visit us in the Vodafone Idea booth and to also experience the transformational impact of technology in the social sector through our foundation program. I had the privilege of briefly sharing with him about our cloud-based collaborative knowledge program, Guru Shala. And in fact, this project elicited a lot of interest from many leaders, ministers such as Mr. Piyush Goyal, and many, many dignitaries, senior secretaries in the government of India and academia. So all of this was good because it allowed us to shine the light on our children who are benefiting and our teachers who are so important and our partners, because only through partnership are we able to deliver such massive programs of social transformation. We firmly believe that happy children make a nation happy, and therefore our initiatives are in order to make a direct or indirect impact on children. And this has been consistently seen by our efforts over the years that we've actually built our education program. As Nilay said, on this occasion of Children's Day, we will of course be releasing Veer Ki Kahaniyan, a book which is based on the stories of real life children and who have been positively impacted by the initiatives of Vodafone Idea Foundation. And of course, also recognize some fabulous children for the impact and positive change that they have created. I would take this opportunity in the end to thank all our partners who've been through this very tough journey of the last few years with us in order to make sure that the common vision that we all share of making a positive impact on the children of today will be the citizens of tomorrow through the use of technology and our groundbreaking initiatives. So, with that, I hand it back to Shelly and again thank our chief guest, Mr. Mukesh Khanna and Mr. Malu, for their precious time to energize our children. Thank you so much. Thank you, Mr. Balaji, for sharing the journey and work of the foundation as it truly helped us know the entire vision and mission of the foundation. Thank you for sharing your thoughts and inspiring our young and older audiences alike. Thank you once again. We would now like to invite Mr. Anurag Malu for the special address. Anurag is the Regional Director, Asia Pacific and Vice President, Global Partnerships at SeedStars. He is a former Teach for India Fellow who was selected as 2041 Antarctic Youth Ambassador and was invited to join the polar pioneer Robert Swan on the 2041 Inspire International Antarctic Expedition in 2013. Anurag is a mountaineer and a global advocate for United Nations Sustainable Development Goals. A very warm welcome to you, Anurag. Thank you so much, Shally. Such a pleasure to be here with everyone here on the Children's Day. I think it's been a while since I have, celebrated Children's Day kind of in this kind of a role. As many of you have heard that I've been a teacher back in 2011 to 2013. I was a fellow with Teach for India and teaching in Pune, very young kids, 6 to 10-year-old, grade 2, grade 3 kids. I think the best time of my life. And I remember every Children's Day or Teachers' Day or any of these days that we used to celebrate and cherish the child in all of us. So wishing you all a very happy Children's Day first. And
Yeah, very glad to be here, Shelly. Anurag, we would like you to share your experience with our students. Mm-hmm. Yeah, I think I think I always say that my life is a story, that I always love to share, and just a lot of experiences in life over last 1 decade, especially since I think after my graduation, I graduated as a software engineer, but chose to become a teacher, and taught for 2 years in low income school in Pune. As I told, the best time of my life, were those 2 years with my kids. Now they have grown up. They have it's about to graduate from schools and getting into colleges. So it's been a journey seeing them all grow. But at the same time, I would say, I have also grown so much in this journey. As much as a teacher, we were there supposed to teach, but I realized I was a learner first. The amount of learning I had as a teacher from all of my children back in the classroom, back in the school was immense. And that is something, I still cherish and always look back when I had to look at my own life and some of the things that uh, I was struggling with. So मैंने अपनी life, notice किया है कि it's not always, that you use wear one hat. आप मल्टीपल हैट्स एक एक लाइफ के डिफरेंट फेजेस में पहनते हो. सो कभी वो टीचर की हैट रही है, कभी वो कोच की हैट रही है, कभी स्टूडेंट की हैट रही है. और आई थिंक आई रियलाइज स्टूडेंट वाला हैट तो कभी हटता ही नहीं है. We are always students of life, and nowadays I'm always say that I'm the student of mountains, and the children, like mountains teach me so much that I think my life के सबसे important life lessons ही I think मुझे mountains से मिलते हैं अभी. So and then there's always you realize कि आप में एक हमेशा बच्चा तो रहता ही है. And I think you be yourself. I think that's where I realized कि जब हम sorry about that. जब हम अपने अंदर के चाइल्ड को अनलीश करते हैं, तो आई थिंक वी कैन बी वेरी ऑथेंटिक. हम बिल्कुल अपने बेस्ट वर्जन होते हैं, बेस्ट ऑथेंटिक वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स. So I think life में बहुत experiences रहे, from traveling around the world, in 60 countries, interacting with students and children in many countries, learning about myself through these travels. अंटार्कटिका एक्सपीडिशन जैसे शैली ने बताया, एक 10 साल पहले आई थिंक मेरी वहाँ जर्नी रही थी. पहली बार मैं इंडिया से बाहर गया था, और इंडिया से पहली बार जब मैं बाहर गया था तो वो कंट्री पहले पाकिस्तान थी, और उसके बाद दूसरा कॉन्टिनेंट था वो अंटार्कटिका था. सो लाइफ में बिल्कुल एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस भी मैंने एक्सपीरियंस किए, और उनसे काफ़ी कुछ सीखा है. सो एज ए टीचर मैं ना क्लासरूम्स के अंदर सस्टेनेबिलिटी, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस करता था मेरे क्लासरूम में, स्कूल्स में. तो उस कारण से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली सर रॉबर्ट स्वान के साथ अंटार्कटिका जाने की, शेयर अबाउट द क्लास रोल ऑफ ए टीचर, कि एक रोल क्या है टीचर का और स्टूडेंट्स का टू ब्रिंग सस्टेनेबिलिटी, व्हाट वी डू इन द क्लासरूम्स. एंड आई थिंक वो एक एक्सपीरियंसेस रहे. पिछले सालों में मैंने लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बनने में काफ़ी मदद की है, टू हेल्प पीपल स्टार्ट. लोगों के पास आइडियाज़ है, ड्रीम्स है, बट उन ड्रीम्स को कैसे सक्सेसफुल करना है, उन आइडियाज़ को कैसे हम एग्जीक्यूट करें, नए स्टार्टअप्स कैसे बिल्ड करें, एंटरप्रेन्योर्स कैसे बने, सॉल्व कैसे करें बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स को. सो आई थिंक वो एक जर्नी रही है जहाँ पे आई हैव इंटरैक्टेड विद स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन, यंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. चाहे वो भूटान हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो कज़ाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया के कॉर्नर्स और फ्रॉम कश्मीर टू इम्फाल, सब जगह, चाहे वो बड़ी सिटीज़ हो. So all of these places, like I've realized one thing that has been common and helped me grow is the learning I had with all of these interactions. So I realized, आप हमेशा वो learning mode में हमेशा रहते हो. As much as you are sharing that learning, but you're actually learning more so much. So वो जो children and student वाली जो feeling है वो हमेशा रहती है. I've seen that वो कहीं नहीं जा रही है. You are always there. And as I told you, now it's more about for me um, reinventing myself into something else. Now एक बहुत पुराना सपना था, बहुत 2000 से माउंटेन्स क्लाइंब करने का. जब अंटार्कटिका से आया था तब ये क्लियर था कि आज मैं बॉटम ऑफ द अर्थ पे जाके आया हूँ, अब मुझे ऊपर भी जाना है, देखना है कि टॉप ऑफ द अर्थ कैसे दिखता है.
How does it look like to climb these mountains? वो कमिट तो कर दिया था अपने आप को उस टाइम पे, एक सपना देखा था कि है ना माउंटेन्स क्लाइम करेंगे, बट इतने साल तक नहीं किए। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे। बट वो सपना हमेशा रहा है यहाँ पे दिलो दिमाग में। उसकी तरफ मेहनत कर रहा हूँ रोज। यू हैव टू कंसिस्टेंटली शो अप। यू हैव टू डू समथिंग अबाउट टू गेट क्लोजर टू योर ड्रीम्स। वो ड्रीम कहीं Right. नहीं गई है, वो है। सो आई थिंक यही एक मौका था लाइफ में। कोविड जैसे ही हिट हुआ, 2 साल पे लाइफ में प्रायोरिटीज बदल गई। अब डिसाइड किया, अब ट्रैवल कम हो गया है, यही समय है मेरे पास अगर मुझे अपने सपनों को और साकार करना है, माउंटेनियरिंग जर्नी में जाना है। तो मैं भी आज 34 का हूँ, 33-34 चल रहा है। एंड एट दिस एज लास्ट ईयर मैंने माउंटेनियरिंग कोर्स किया। उससे पहले मैंने माउंटेनियरिंग के लिए हाई एल्टीट्यूड पे पासेस क्लाइंब करना शुरू किया, ट्रैक करना शुरू किया, 17,000 18,000 फीट तक। फिर लास्ट ईयर मैंने 2 6,000 मीटर की पीक्स क्लाइम की। फिर उसके बाद माउंटेनियरिंग कोर्स किया नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से। तो मैं स्टूडेंट की तरह वहाँ गया वापस से 1 महीना कोर्स। तो जो चीज़ें मैंने नहीं सीखी कभी लाइफ में, कभी नहीं किया, वो मैंने करना शुरू किया। So I think there has been a great learning in that sense in life, um, and that I felt, like challenges हमेशा रहेंगे, but आपको अपनी journey को continue करना है. You have to keep really moving forward. I'll take a pause here, Shali, because I think I've been speaking a lot. Yes, so Anurag, like you've been mentioning, आप जैसे बता रहे हो कि आप अलग-अलग spheres में as a student also अपने जर्नी को एक्सप्लोर कर रहे थे और आपने अपने अंटार्कटिक एक्सपेडिशन के बारे में बताया। If you tell us more about किस तरीके के challenges आपने फेस किए, स्पेशली जब आप कोई भी नई चीज करना शुरू करते हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक अडल्ट हो, तो different kinds of challenges come your way. What kind of challenges came your way when you were on your Antarctic expedition and how did you overcome them? थैंक यू शैली, फैंटास्टिक क्वेश्चन। आई थिंक जब मैं अंटार्कटिक एक्सपीडिशन के लिए जा रहा था, तैयारी कर रहा था, मैं टीचर था। ना तो मेरे पास कोई बहुत सारे पैसे थे, कुछ थे फंड रेजिंग के लिए। लाइक फाइनेंशियल चैलेंज एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट था उस टाइम पे। एक्सपीडिशन बहुत महंगा है, उसके लिए मेरे को स्पॉन्सरशिप्स ढूंढनी है, मुझे फंड रेज करना है। लाइफ में ये सब कभी किया नहीं है। बट देन आप करना शुरू करते हो, आपको 1,000 लोग को आप रीच आउट करोगे, सब मना करेंगे, 1 या 2 लोग हाँ करेंगे। बट इट डजंट मीन दैट यू गिव अप। लाइक challenges तो आते रहेंगे, these roadblocks will continue to come and go, but it was very important for me to keep moving forward. But उन्हीं challenges के साथ में बहुत अच्छी चीजें भी होती थी। जब कोई हाँ करता था, how can we support, and then you find so many supporters also, उन challenges के बीच में। तो वो होता था। फिजिकल चैलेंज थी, कभी ट्रेनिंग वगैरह की नहीं थी, इन सब चीजों के लिए, तो ट्रेनिंग शुरू की। मेंटल ट्रेनिंग भी इतनी जरूरी है जितनी फिजिकल ट्रेनिंग जरूरी है। एंड आई थिंक अब मुझे लगता है शायद अंटार्कटिका मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंज और वो नहीं था जितना अभी मेरे लिए माउंटेनियरिंग लगता है। Like real expeditions now I feel is life, but what we learned in Antarctica was actually how to even fundraise, how to even train yourself to dream big and actually pursue that dream. जब सब मना कर रहे कि मत करो, ये पॉसिबल नहीं है, and then you move forward and you make those things happen. I think like सबका ना सुनना, चाहे वो घर हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, कि किसी ने देखा नहीं किसी को उस टाइम पे अंटार्कटिका जाते वक्त। So like there is a lot of no that you will hear in life, but you know what you really want at the end of the day. Can you make something happen? So I think मेरे लिए वो बहुत क्लियर था, चाहे कुछ भी रिसोर्सेज उस टाइम पे नहीं थे, बट ये क्लियर था, I am envisioning myself, I can see myself in Antarctica, and things eventually happen. You know, everything fall in place in the end. That's what I have noticed. All of these challenges will continue to come forward. The most important thing that will stop you is yourself. राइट। अच्छा अनुराग, जैसे आपने यहाँ पे आप यू हैव बीन सक्सेसफुल इन डाइवर्स स्पेसेस ऑफ लर्निंग, चाहे वो एक टीचर के फॉर्म में हो, कोच के फॉर्म में हो, एंटरप्रेन्योर के लिए हो, कम्युनिटी बिल्डर हो, माउंटेनियर हो, एंड मेनी मोर। आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स जो हैं अपनी कॉलिंग इन लाइफ कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? while every student tries to explore and discover their interest also, how do you identify your calling in life, especially as a student? A beautiful question, Shelly. I think it's a journey. It takes time. हाथों हाथ right away answer नहीं मिलेगा आपको. Like if you're looking for an answer right away, you will not have it. You need to experiment a lot.
मैं बता रहा हूँ, मैंने आईआईटी एग्जाम दिया, क्लियर हुआ, पर आईआईटी ज्वाइन नहीं किया। हमेशा चाहता था करूँगा, बन गया कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट देन रियलाइज किया उसके बाद, बाय द टाइम आई एम लर्निंग दोस 4 years इन यूनिवर्सिटी, आई एम लाइक नहीं नहीं, ये जिंदगी भर नहीं करना है मुझे। हाउ गुड दिस मे बी, बट दिस इज नॉट समथिंग आई वांट टू डू। मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें फुल लाइफ भर काम करने का। टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, बट जिंदगी भर आई डोंट वांट टू कीप। so it's what helped me in life is to understand what I don't want to do। जो नहीं करना है मुझे वो क्लियरली पता लग गया, और उसके बाद मैं फिगर आउट करता हूँ कि करना क्या है फिर। this also helps to eliminate something from life, this is not what I want to do, then it helps you figure out actually what you want to do। so I think मेरे लिए वो जर्नी रही शुरुआत में हमेशा परसुइंग my own dreams goals की, जहां मुझे थोड़ा सा डायरेक्शन मिलता है, लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट, लेट्स फाइंड दैट, एक्सपेरिमेंट करना। सो टीचर बना, वहां से नई चीजें खुली, रास्ते नए दरवाजे खुले। हमेशा सारी चीजें नहीं पता है, समटाइम्स इट्स ओके टू बी क्लूलेस इन लाइफ। मेरे पास कोई सारे आंसर थोड़ी ना है, मुझे नहीं पता कि मैं 10 साल बाद एक्चुअली क्या करूंगा, क्या। हाँ, थोड़ा सा है आइडिया कि मे बी दिस इज वेयर, बट आई न्यू इट। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू क्लाइंब माउंटेन्स, मुझे नहीं पता था वो 5 साल बाद होगा या 10 साल बाद होगा, एंड इट टुक मी अ डिकेड to come closer to the dream। So you need to nurture those dreams, you need to let it take time, be patient in this journey, and follow, and जो life में आ रहा है आपके सामने, do that so well, and then new doors will open up। So whatever I have taken up, I have taken up with that love, I have done all of those things with so much of love and passion, like आपको आप, you start enjoying that so much, and that's okay। So you need to stay focused when you are on that journey, and keep experimenting in life। The more you experiment, you will learn more about yourself, you will discover your own human potential। What does it mean for me to actually uh, find my own self, what I enjoy doing the most, what I'm able to offer the most। So yeah, I think like I continue to upskill myself, I have to unlearn sometimes, I have to relearn sometimes। नई चीजें सीखना बहुत जरूरी है। नहीं किया, नहीं आता, कोई बात नहीं, सीख लेंगे, कर लेंगे। वो ना है ना, वो दिमाग में नहीं है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आई हैव द पोटेंशियल to do anything I want to do in life। And that's what I think we are all on that journey of figuring out, of exploring our own human potential, to keep reinventing ourselves, to keep discovering who we are actually made of। So I think that's what today I am on that journey, and mountains helped me, rediscover that every Right. time, learning something new about myself। एब्सोल्युटली। अच्छा अनुराग, आज हमारे साथ कई सारे बच्चे भी जुड़ेंगे जो कि हाँ, अलग-अलग फील्ड्स में, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, आर्ट्स में उन्होंने एक्सेल किया है। एंड वी वांट टू नो कि आपने इतने सारे स्फीयर्स में काम किया है, आप सक्सेसफुल रहे हैं। वी वांट टू नो दैट हु हैज़ बीन योर रोल मॉडल इन योर एंटायर जर्नी? I think thank you, beautiful question again। लाइफ में अलग अलग फेजेस में अलग अलग रोल मॉडल्स रहे हैं। I don't want to sound cheesy, but like my kids have been one of my role models, but my mom has been my biggest role model in life। My grandfather, from Sir Robert Swan to Bachendri Pal Ma'am, the first Indian woman to climb Everest, to Sir Bankar Roy। So a lot of these people in different spheres of life, चाहे वो आपकी सोशल सस्टेनेबिलिटी वाली लाइफ हो, जहाँ पे आप एडवोकेट वाला काम कर रहे हो, चाहे वो आप एक्टिविस्ट वाली लाइफ हो, चाहे वो मेरी कॉर्पोरेट लाइफ हो। There are different role models in different spheres of life at different points। A lot of entrepreneurs that I have worked with, or helped in different countries, a lot of them have inspired despite the kind of challenges they face through। So I think for me, everything, you learn different things from different people, and everyone has their own potential, and their own ways to inspire you। So I think I seek inspiration from everyone, but at the same time, nature is my biggest role model। A lot of my answers I really find in truly in nature, in the environment that we live in, with the people we are surrounded with, and the mountains। Thank you. Just one last thing that you would want to share, a message that you would want to share with our children today. uh, don't let what happens today, in your schools, in your grades, define your future।
You can become really anything. It's okay if you're failing right now, if you're succeeding. None of these things can actually define what you can potentially become in future. You need to take charge, and control of your own dreams and work towards that. Take ownership, किसी और के हाथ में उसकी चाबी मत दो, वो अपने हाथ में रखो. Ask for help when you need it, but always know that you can achieve whatever you want to achieve. There is nothing that you can't possibly do, because life, it's a journey where you are discovering your own human potential. So like like we'll be meeting Mukesh Khanna soon. So unleash that Shaktiman you have in yourself. Even Gangadhar has to do that, right? So we all have that Shaktiman, those superpowers in us. There is nothing that could stop us to get to our dreams. So as much as you dream, also do something about it. And together, I know if we all dream and do something, we'll be able to achieve our own goals in life, but also help the world achieve the global goals that we have in front of us. So with that, I really wish you all that you can dream big and act towards your dream. You can show up to live those dreams every day. Thank you, Anurag. Thank you for your encouraging and inspiring words. Your ideas, passion, journey would surely motivate everyone watching this program to keep pushing themselves to find their highest potential to scale new heights. Thank you so much for joining us today. Thank you, Shelly. Thank you, VI Foundation. Lovely to be here. Bye, everyone. अब हम आज के हमारे सम्मानित अतिथि श्री मुकेश खन्ना, हमारे अपने सुपर हीरो शक्तिमान का स्वागत करना चाहते हैं, जो सभी बच्चों के लिए कुछ स्मृतियां और खुशियां लेकर आए हैं. Mr. Mukesh came into the film industry in 1982 after graduating from Film and Television Institute of India. Mukesh ji is best known for playing Bhishma in B.R. Chopra's Mahabharat. 2007 में उन्होंने गवर्नमेंट द्वारा फंडेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शक्तिमान में भाग लिया, जिसका लक्ष्य था प्रिवेंटिंग malnutrition and mother child mortality rate, anemia in girls and health awareness. Sir has also teamed with his former acting school, Film and Television Institute of India, for a 3-month acting course. A very warm welcome, sir. Yeah. Nice to talk to you all, people. Tell me, what do you want to? जी बोलिए. हम चाहेंगे कि आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जुड़े हुए बच्चों के साथ शेयर करें और किस तरीके से आर्ट्स को यूज किया जा सकता है बच्चों के द्वारा टू लर्न वेरियस लाइफ स्किल्स. अगर आप थोड़ा सा हमारे बच्चों के साथ इस प्रश्न के ऊपर बातचीत करें तो बहुत खुश होंगे हमारे साथ जुड़े हुए सभी बच्चे. सबसे पहले तो मैं आज जिसे हम चिल्ड्रन डे कहते हैं, मुझे शिकायत रही है कि चिल्ड्रंस डे क्यों होता है, चिल्ड्रंस वीक क्यों नहीं होता, पूरा साल क्यों नहीं होता बच्चों के लिए. You see, you must understand that the world or of any country, of the the future depends upon the kids of today. इन्हीं के कंधों पर हमारे देश का पूरा भार आने वाला है. इनके कंधे अगर स्ट्रांग नहीं होंगे तो हमारा देश जो है लड़खड़ा जाएगा. इसलिए मैं हर एडल्ट को कहता हूं, इवन मैंने मोदी जी को भी कहा था कि अगर आप बस बच्चों के लिए पैसे नहीं है तो फिर किसके लिए पैसे हैं. आई वॉज टेलिंग देम टू मेक मोर एंड मोर चिल्ड्रन फिल्म्स फॉर देम. You see, children of today are not getting the right kind of education which they should get. They are watching every kind of films which adults watch. How can they grow? How can they have lost their childhood. हमारे जमाने में हमने बचपन जिया है. हमने चोर पुलिस खेली है, थप्पा खेला है, भाग दौड़ हुई है, कितनी खेला है, जंप मारते थे ऊपर से. आज का बच्चा टेबल कुर्सी बैठकर या पलंग पर बैठकर अपने मोबाइल को लेकर टिक 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 करता है. क्या विकास होगा उस आदमी का, क्या विकास होगा उसके कंधों का, जिसको सूरज की किरणें चाहिए होती है. जब तक आप सूरज की किरणें नहीं लोगे आपके अंदर विटामिन डी नहीं बनेगा. विटामिन डी आपका बनता है सिर्फ सूरज की किरणों से. ये दवाइयों से कुछ नहीं होता. फ्रीली अवेलेबल भगवान दिया हुआ आपको, उसको आप लोग यूज नहीं करते और आप बाद में किसी को बड़ी उम्र में जाके आपको फिर आर्थराइटिस हो जाती है और वो हो जाता है. सो कहीं ना कहीं बच्चों को तवज्जो दीजिए. मैंने देखिए, मैं चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का 3 साल में चेयरमैन रहा था. उस वक्त भी मेरी यही मांग थी कि बच्चों की फिल्में बनाई जाए. मैंने उस वक्त भी यही कहा था
कि भाई आप लोग जो है वो मैंने तो यहाँ तक एक रूल बनाया था कि एवरी प्रोड्यूसर आफ्टर फिफ्थ फिल्म द सिक्स्थ फिल्म ऑफ हिज शुड बी अ चिल्ड्रन फिल्म। यू सी यू टू एजुकेट चिल्ड्रन। आज के चिल्ड्रन बहुत फास्ट भाग रहे हैं। मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि आप ही अपने खुद के ये बहुत अच्छी बात कही अनुराग ने कि ये कि भाई आप जो है वो आपका ये आज का प्रेजेंट कोई मायने नहीं रखता आपके फ्यूचर में। आप एसएससी में या एचएससी में आप 10 लोगों के बीच में खड़े होकर स्माइल करके करते कि हम नंबर 98% आया, साहब कोई मायने नहीं रखता। मायने वो रखता, मैं अपनी क्लास में 27वां नंबर आया था, कभी मुझे ये फील नहीं हुआ कि 1 नंबर 2 नंबर क्या होता है। पर आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं वहां बड़े से बड़े लोग पहुंचना चाहते हैं। मैं इन सभी बच्चों को बता दूं, वो इसलिए नहीं कि मैंने एसएससी में फर्स्ट क्लास पास किया है या बीएससी में फर्स्ट क्लास पास किया है या एलएलबी में फर्स्ट क्लास पास किया है। मैं इसीलिए आज यहाँ पहुंचा हूं क्योंकि मैंने जिंदगी का एग्जाम पास किया है। दिस इज वॉट इज नीडेड इन टूडेज एजुकेशन। टीच देम स्किल्ड एजुकेशन। मुझे शिकायत रही है कि हम क्यों नहीं आज बच्चों को तवज्जो देते हैं। यूसी हम हर तरह की यूसी माफ करना, हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चुनाव में घुसा हुआ रहता है। 5.5 साल के अंदर 10 बार तो चुनाव प्रक्रिया आती है और उसमें सिर्फ रैलियां निकलती हैं और कैसे जीता जाए, कैसे कैसे बड़े को मारा जाए, कैसे अपोजिशन उसको बोलती है वो उसको बोलती है। कोई ये नहीं सोचता कि आपका बच्चा क्या सीख रहा है। आपको आप जिस तरह से पार्लियामेंट में झगड़ा करते हो, बच्चे लोगों को शर्म आती होगी कि हम क्लास में भी ऐसे झगड़ा नहीं करते थे, जहां उठा के आप स्पीकर फेंकते रहते हो। सो कहीं ना कहीं you need to educate the today's children. Tell them, like he said very correctly, every child has a Shaktiman in it. Every child is a Gangadhar. उसके अंदर शक्तियों का असीम अपार अनंत खजाना छुपा हुआ है जिसको उजागर करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि शक्तिमान की तरह कुंडलिनी जागृत की जाए, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है वो। लेकिन अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करोगे, आपकी कुंडलिनी धीरे धीरे ऊपर आएगी। यू विल बी बेटर देन द बॉय नेक्स्ट टू यू इफ यू प्ले। सो प्ले, स्टडी एंड प्ले। यू मस्ट बिकम यू। हमारे यहाँ पर एक गलत भावना है कि पढ़ाई करने वाले बच्चों को चश्मा चाहिए और खेलने वाले बच्चों को क्लास बंक करने की इजाजत दी जाती है। उनको टीचर दे देता है कि हाँ जाके तुम क्रिकेट खेलो, तुम नेट प्रैक्टिस करो। व्हाई? अ चाइल्ड, अ स्पोर्ट्समैन शुड बी अ गुड रीडर। अ रीडर शुड बी अ गुड स्पोर्ट्समैन। दोनों के बीच के दोनों की फैकल्टियों को आप उजागर कीजिए, दोनों को मौका दीजिए, दोनों को खेलने को दीजिए। नहीं तो ये हमारे यहाँ पर चश्मा सिस्टम आ गया है कि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल का मतलब एक चश्मा लग जाता है तो वो इंटेलेक्चुअल हो जाता है। नहीं साहब, इंटेलेक्चुअल तब होता है जब आपके अंदर की इच्छा जागती है, आप जब अपने आप को शक्तिमान बनाना चाहते हैं। मुझे कई बार कहते हैं सर शक्तिमान कैसे बनाया जाता है। मैंने कहा शक्तिमान नहीं बन पाओगे आप। लोग गोल गोल घूमने की कोशिश करते थे और गिर जाते थे। मैं उनसे कहता था देखिए शक्तिमान गोल गोल घूमता है क्योंकि उसके अंदर अपार खजाना है। तुम्हारे अंदर वो अभी तक शक्ति नहीं है, या तो शक्ति को हासिल करो, योगा करो। सबसे बड़ी बात मैं आज के बच्चों को बोलना चाहता हूँ, मैं माफ करना, फिल्म इंडस्ट्री के कई एग्जांपल्स भी सामने आए। कल परसों एक और आदमी की जिम में मौत हो गई है। ये तीसरी या चौथी मौत है जिम में ट्रेडमिल पर भागते भागते। किसी जिम्नेशियम आपकी बॉडी को नहीं समझता। जिम्नेशियम का ट्रेनर आपके बॉडी को नहीं समझता। वो आपको पूछता है कितने महीने में आपको सलमान खान बनने का है। किसी वो, लेकिन जब योगा करते हो तो योगा आप अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेच नहीं कर सकते। आप उतना ही आपके कंधे, आपके घुटने उतने ही टच करेंगे जमीन को जितने आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, पर आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। सो डू योगा, डू प्राणायाम, यू विल बी बेनिफिटेड थ्रू आउट योर लाइफ। जिम्नेशियम में कभी बुराई नहीं करना चाहता, पर अगर लिमिटेड अमाउंट में जिम्नेशियम किया जाए तो अच्छा है। बट आजकल सब लोगों को शॉर्टनेकर बनने का शौक है। उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं उस बनने के लिए। आपकी जिंदगी में आप जाके 3-3 घंटे 4-4 घंटे आप जो है भागते रहते हो या डंबल मारते रहते हो। नो नो, डोंट डोंट डू दैट। डू सूर्य नमस्कार, डू 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 योगा, डू प्राणायाम। इट विल। और कोरोना ने तो और भी सिखा दिया आप लोगों को इस वक्त कि भाई आपकी ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन आपको योगा देगी, आपको ये सब चीज नहीं देगा। सो माई सेइंग टू देम इज कि भाई हैप्पी चिल्ड्रन डे। Children should not run like other people are running. They should enjoy their childhood. They should worry about their body. शक्तिमान ने कहा था शरीर मंदिर है, उसकी पूजा कीजिए। I am literally mean that. Children, आप अपने बच्चों, आप अपने शरीर की पूजा कीजिए। Be aware of your lungs, your livers, your heart. किसी को कुछ नहीं पता।
सिगरेट पीना शुरू करता है, उसको पता नहीं है कि लंग्स खराब करेंगे. सो स्टार्ट नोइंग, यू नो योर बॉडी, डॉक्टर विल हेल्प यू मोर इफ यू नो योर बॉडी. सो माई इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू से कि बड़े लोगों को भी यही कहूंगा, वक्त निकालिए, अपने बच्चों के कंधों को मजबूत कीजिए, उन्हीं के कर्णधार हैं हमारे देश के, और उसी पर हमारा देश टिकेगा. टेक देम, केयर देम एंड नर्चर देम. जी. बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर. सर, हम बहुत सारे बच्चे जो हैं आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपने जैसे बोला कि हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना बहुत महत्वपूर्ण है, और सभी बच्चों को इस चीज़ के बारे में सोचना, ध्यान रखना, एंड स्कूल का भी इसमें बहुत योगदान होता है. तो इसके लिए हम आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, जैसे हेल्थ आपने बोला, इसी तरीके से कौन सी और ऐसी वैल्यूज हैं जो बच्चों को डेवलप करना शुरू करना चाहिए अपने बचपन से ही, अपने चाइल्डहुड से ही, जिसके ऊपर वो काम करना शुरू कर सकते हैं, और स्कूल का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है? देखिए, हमारे बचपन में स्कूलों में मेरे ख्याल से शायद एक मॉरल साइंस की क्लास भी हुआ करती थी. एक क्लास होती थी जिसमें मॉरल वैल्यूज बताए जाते थे, जो मैंने शक्तिमान में छोटी छोटी मगर मोटी बातों के थ्रू मैंने उनको बताने की शुरू किया कि बड़ों के सामने पैर बैठाकर नहीं बैठा करते, बड़ों की इज्जत करो, आपकी इज्जत होगी. ऐसे छोटी छोटी बातें, वो मॉरल साइंस की क्लासेस खत्म हो गई. आज जर्मन क्लासेस आ गई है, आज कराटे जूडो की क्लासेस आ गई है. इन बच्चों का जितना शरीर विकसित होना जरूरी है, उससे ज्यादा उनका मन विकसित होना जरूरी है. आपने सही फरमाया कि उनको 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 जीवन के मूल्यों की तरफ भी आकर्षित कीजिए. उनको ये पता कीजिए कि मॉडर्निटी इज नॉट द सक्सेस. हमारी परंपरा, हजारों सालों की परंपरा है, वो हमारी विरासत है. अगर आप इतना आगे बढ़ जाओ कि आपको ये भी याद नहीं रहे कि हनुमान जी संजीवनी पहाड़ किसके लिए उठाकर लाए थे, अगर इस सवाल में भी अगर आप गड़बड़ा गए थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, तो फिर इससे ज्यादा और क्या. आप तो आगे चल के धीरे धीरे इतना फास्ट भागोगे कि दादा दादी का नाम भी भूल जाओगे. सो बी विद योर फैमिली, हैव मॉरल वैल्यूज, बड़ों की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, उनके पैर छुओ, सुबह उठ के अपने माता पिता के पैर छुओ. इससे बड़ा आपको कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा. आप फादर मदर को ओल्ड मैन मत कहिए, जो हमारे वेस्टर्न कल्चर में है. माफ करना, वेस्टर्न कल्चर का बहुत कुछ हमारे यहाँ पर धीरे धीरे सेंध लगाता जा रहा है, सीप्स कर रहा है हमारे अंदर. हमारे यहाँ भी आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई. वो कब जाएगी जब आपको छठी क्लास में आपको योगा पढ़ाए, आपको गीता का पाठ देना चाहिए. सिर्फ लॉर्ड मैकाले ने 6th स्टैंडर्ड में 1838 के आसपास, आई डोंट नो, इंग्लिश इंट्रोड्यूस की थी, ये कहकर कि आई विल बी चेंजिंग द कल्चर ऑफ इंडिया. बाकायदा उसने पार्लियामेंट में कहा था. और वो कानून कॉन्वेंट सिस्टम हम पढ़ रहे हैं आज तक, जिसमें सिर्फ रटाफिकेशन करके पास करने को सिखाया जाता है, फर्स्ट इन द क्लास सिखाया जाता है, लेकिन जिसके अंदर आपको इंसान नहीं बनाया जाता, जो गुरुकुल में होता है. गुरुकुल में एक 16 साल का बच्चा कुछ भी कर सकता है. हमारे यहाँ पर बीए पढ़ने वाला भी एक स्टूडेंट शायद, हो सकता है, माफ करना, अपने घर में वायर चेंज करके बल्ब भी नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसके पास वक्त नहीं, उसने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है. कारपेंटरी नहीं कर पाएगा, फूल नहीं उगा पाएगा. See, all these things are skilled education, जो मोदी जी, अभी मैंने सुना है अपने. So syllabus, again I would come to the back to the thing, उनकी सिलेबस को चेंज कीजिए. हमारे महापुरुषों की कहानियां उन्हें बताइए, हमारे क्रांतिकारियों की कहानियां उन्हें बताइए. मुगल की कहानी हम जानते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब. दादा दादियों के पूरे लिस्ट मालूम है. अपने घर के फादर के बाद, दादा के बाद में किसी का नाम नहीं मालूम. So you see that education has to be thrown away. You got to bring, आप गीता डालिए छठी क्लास में. किसी ने मुझे कहा था, सर गीता बच्चों को क्या समझ में आएगी? मैंने कहा नहीं समझ में आएगी तो बड़ों को पूछेंगे, और बड़ों को नहीं मालूम होगा तो वो मालूम करने की कोशिश करेगा और बताएगा कि कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा था. पूरी जिंदगी का सार है उस गीता के अंदर. जिस दिन वो गीता पढ़ना शुरू कर देगा छठी से, माफ करना, मैंने भी संस्कृत छोड़ दी थी भूगोल के चक्कर में. ज्योग्राफी और संस्कृत में ऑप्शन था मेरे अपने स्कूल में, और मैंने भूगोल लिया. आज मैं डेफिनेटली पछता रहा हूँ कि आई शुड हैव टेकन संस्कृत. हमारे अरबों चीजें पड़ी हुई हैं उसमें, जिसमें जर्मनी ने उसको सीख के उसके मेडिसिन बनाए. सो चेंज द एजुकेशन सिस्टम.
तब लड़कों को आर्ट के थ्रू भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप कहते हैं कि आर्ट के थ्रू क्या किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, बट वो आर्ट की क्रिएटिविटी आज के अश्लील गानों की तरह क्रिएटिविटी नहीं होती है। लोग कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, हम राम को मूंछ भी लगा देंगे, उसको नहीं बोलते अभिव्यक्ति की आजादी। राइट काइंड ऑफ नॉलेज बिकम्स योर विजडम व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग इट। सो मुझे लगता है जहां पर हम कहते हैं कि हम जैसे बोओगे वैसे बीज बनेंगे, तो जैसे बच्चों को आप स्कूल में पढ़ाओगे, आज तो आने वाली जनरेशन मैं बोलता हूँ वेस्टर्न चीजों को जो हटा दीजिए। मुझे अभी कल मैं अपने अपने प्रोग्राम में शेक हैंड नहीं करता हूँ। मुझे लोग कहते हैं सर शेक हैंड किया कीजिए, सामने वाले आदमी को अपमान फील होता है। मैंने कहा अपमान फील होने दो, पर हमारी परंपरा ये है जो कोरोना ने सिखाई है, पकड़ लो उसे। शेकिंग हैंड इज अ ब्रिटिश सिस्टम। क्यों हम उसे लेकर घूमते, हाय हाउ आर यू, शेक हैंड करते हो, आप अपनी एनर्जी किसी और को देते हो। ये सब चीजें किसी को नहीं मालूम। इसलिए मैं आपको बता दूं, पिछले 2.5 साल में मैंने किसी के साथ हाथ शेक हैंड नहीं किया है, आप नहीं मानोगे। पर ये मैंने पकड़ लिया कोरोना से। और ऐसी कई चीज की हमारी देश की परंपरा है जो सिखाई जानी चाहिए। सो आर्ट से भी सीखा जा सकता है, सिखाने से भी सीखा जा सकता है, और किसी भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जी बिल्कुल। सर एक और चीज जानना चाहेंगे कि कम्युनिटी, जब बात करते हैं कि आसपास से बच्चे जो हैं वो काफी चीजें सीखते हैं, तो अगर बात की जाए कि कम्युनिटी का क्या रोल होता है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर, अगर थोड़े बहुत अपने थॉट्स आइडियाज आप उसके ऊपर भी शेयर करें हमारे साथ। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो उसका सबसे पहला गुरु उसकी माँ होती है। उसके बाद उसका बाप उसका गुरु होता है। उसके बाद में आया घर की जो काम करती है, जो जिसके साथ बैठकर वो कभी कभी सास भी कभी बहू देखते हैं, क्योंकि माँ बाप दोनों बिजी है कहीं काम में, वो उसकी टीचर बन जाती है। उसकी लैंग्वेज सीखता है। फिर उसके बाद भी उसके दोस्त उसकी जिंदगी में आते हैं, उनसे सीखता है। फिर टीचर्स आते हैं उनकी जिंदगी में, और टीचर्स रियली बिकम द टीचर्स। इसीलिए स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द बिकॉज। सो कम्युनिटी बहुत इफेक्ट करती है बच्चों को। बच्चा कहाँ रहता है, बच्चा क्या करता है, बच्चा किन दोस्तों की संगत में है, वो सडनली, बिकॉज जिस बच्चे की एक उम्र आती है 16-17 साल की, जब उसको हम इम्प्रेशनेबल एज बोलते हैं, जिसमें वो देख देख कर अपने बालों में जेल भी लगाना शुरू कर देगा, जिसको देख देख के वो मोरी की पैंट भी पहनना शुरू करेगा। अमिताभ बच्चन ऐसा पहनता है, वो सलमान खान शर्ट उतार के फेंक देता था, वो भी फेंकेगा। दैट्स एन एज कॉल इम्प्रेशनेबल एज। कम्युनिटी बहुत बहुत इफेक्ट करती है। इसीलिए माँ बाप का फर्ज है कि देखे कि बच्चे कहाँ जाते हैं। हमारे माँ बाप के पास माफ करना वक्त नहीं है। बाप कमाई के लिए जाता है, माँ किटी पार्टी में जाती है, और बच्चा जो है आया के साथ में बैठकर सीखता है। पास टाइम दीजिए उनको। बच्चों को टाइम नहीं दोगे तो बच्चे आगे जाकर आपको भी टाइम नहीं देंगे। बड़ी उम्र के कभी कभी मैंने देखा दादा दादी को, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, वो अपनी पत्नी के साथ में, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, दादा हम बात काम करने जा रहे हैं। वो बता रहे मेरे को भी तो कुछ टाइम दिया करो। और वो बोलेगा सर आपने कब टाइम दिया था मेरे को, जब मैं बहुत छोटा था। You must spend time, make friends with your kids. जो बच्चा माँ बाप के संरक्षण में बड़ा होता है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनता है, वो बच्चा शक्तिमान बन सकता है। लेकिन जो बच्चा आया के साथ, दोस्तों के साथ, अपने टपोरी दोस्तों के साथ बड़ा होगा, वो जिंदगी में कभी स्ट्रांग नहीं होगा, उसका शरीर स्ट्रांग नहीं होगा, उसका माइंड स्ट्रांग नहीं होगा, और वो लोग स्ट्रांग नहीं होंगे तो हमारा देश स्ट्रांग नहीं। So community, yes, but that is part of your mother father's job. It is not. बच्चा कहाँ जाता है माँ बाप को देखना चाहिए। आप क्यों अलाउ करते हो, क्यों अलाउ करते हो क्लब। अगर आप खुद क्लब में जा रहे हो तो बच्चा भी क्लब में जाएगा ही ना। आप अगर खुद शराब पीते हो तो बच्चा भी शराब पिएगा ना। कहीं से आपको अपने आप को सुधारना चाहिए, बहुत जरूरी है ये सब। जी जी सर, आज चिल्ड्रंस डे के अवसर पर हमारे साथ काफी बच्चे जुड़े हुए हैं। आप उन लोगों के साथ क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगे, एक मैसेज जो आप उन सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे? बच्चों, मैं एक बहुत अजीब सी चीज आपको बताऊंगा, जो जो पहले भी बताई जा चुकी है कई बार, कि वर्तमान में जीने की आदत डालो। आई थिंक डॉल कार्नेगी ने ये कहा था कि हम अतीत और भविष्य को अपने वर्तमान के कंधों पर लेकर चलते हैं, तो अतीत और भविष्य को वर्तमान के कंधों पर लेकर चलने वाला परम से परम प्रचंड पराक्रमी भी लड़खड़ा जाता है। मीनिंग उसकी शॉर्ट ये है, आज वर्तमान तुम्हारे हाथ में है, भविष्य तुम्हारी कल्पना में है, अतीत तुम्हारे पीछे छूट चुका है,
ना उस पर तुम्हारा कंट्रोल है, ना तुम्हारे भविष्य पर है। कंट्रोल है तो आपने वर्तमान पर है। जो कुछ भी काम करो उसमें अपना 100% दो। मैंने तो अभी मैं तो खुद अपनी फिलॉसफी बनाता रहता हूँ। मैं कहीं पढ़ के नहीं करता कुछ। मैंने अभी एक फिलॉसफी बनाई थी, वही करो जो सही है, सब सही होगा। पर उस सही को भी आप सही ढंग से करो। तो मैंने अपनी जिंदगी को 5-5 मिनट में डिवाइड कर दिया है। लिव जिंदगी माइक्रो वर्तमान। आप 5 मिनट की जिंदगी जियो, भूल जाओ उसके पहले आपने क्या किया था। जैसे भी शुरुआत में कहा था उन्होंने कि भाई हमारा आज क्या होता है वो डिपेंड, उससे कोई आप बड़े बनेंगे जरूरी नहीं है। उस 5 मिनट को 100% विद ऑल योर इंद्रियां, आंख कान नाक मुंह स्पर्श इंद्रियों को लेकर आप पूरे शरीर को ढाल दो उसके अंदर। आप सिर्फ देखो मत, आप अपने वातावरण को एसिमिलेट करो। यू विल बिकम शक्तिमान, because your 5 minute will be best performance of your life, and that will make another 5 minutes of your another best, and that will make another 5 minute, and the whole zindagi will become, we don't use our body. We hardly use 35% of our capabilities. आप उसको 65% करिए ना, आप उसको 80% कर दीजिए। भूल जाइए, घोड़े की तरह नाल लगाकर, चाहे वो छोटा सा काम हो, किताब में पढ़ने का हो, चाहे वो ब्रश करने का हो, चाहे बाथरूम में जाने का हो, चाहे टीचर से बात करने का हो, चाहे गर्लफ्रेंड से बात करने का हो, आप उसमें सिर्फ और उसमें रहिए। यू विल सी दैट यू विल बी ग्रोइंग। आपका फोकस कितना बढ़ जाएगा। और जिंदगी फोकस पे डिपेंड करती है। हम लोग सब बिखरे हुए जिंदगी जी रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगले प्रोग्राम में मुझे टाइम देना है। मैं अगर खाना खा रहा हूं तो मुझे दिमाग में आता है किसी ने मेरे को पैसे नहीं दिए। दैट इज नॉट द वे ऑफ लिविंग। लिव ओनली फॉर दोस 5 मिनट्स। अगर आपने उसको अपना लिया, योर लाइक आई सेड, वही करो जो सही है, सब सही होता है जी। थैंक यू तो सो बच्चों मच आप यही सर। करो, वर्तमान में जियो। मेरा यही आपसे यही मेरा एक मैसेज है। मैसेजेस तो बहुत है मेरे पास, मैं तो शक्तिमान बन के आपको मैंने हजारों मैसेजेस दिए हैं। बट आज का करंट मैसेज ये है कि भागो मत। आप अपनी जिंदगी के वर्तमान में जियो और वर्तमान को स्ट्रांग बनाओ। और लोग भाग रहे हैं, भागने दो। तुम नहीं भागोगे, तुम खड़े हो जाओगे। देखोगे गंगा का नदी कहाँ बह रहा है, इधर जाओ कि नहीं जाओ। जाओ नहीं तो खड़ा रहो, तट पे खड़ा रहो। डिसाइड अबाउट योर मूवमेंट एंड यू विल बिकम स्ट्रांग। यू विल बिकम फ्रॉम गंगाधर, यू विल बिकम शक्तिमान जी। थैंक यू सो मच सर, हमारे बचपन की यादों को वापस लाने के लिए और आज के बच्चों को अपने शब्दों में और अपने अनुभवों के बारे में, अपने कहानियों के बारे में उनको बताया आपने, उनको प्रेरित किया। थैंक यू सो मच हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। We have now come to one of the most awaited event of this day, the book release of the second edition of Veer Ki Kahaniyan, which is a compilation of stories of outstanding students from V projects. What would be a better occasion for us to do this than this day when the whole country celebrates in small and big ways in which its students have and will be shaping the future of our nation. Can we have the launch screen, please? So now let's take a look at the second edition of वीर की कहानियां। वीर की कहानियां जो बुक है उसका सेकेंड एडिशन जो है वो हमने आज लॉन्च किया है। एक झलक देखते हैं इस किताब की और समझते हैं कि किस तरीके की स्टोरीज जो हैं वो यहाँ पे कवर की गई हैं। The book starts with the introduction of our superhero Veer. Veer who travels across the states to show the inspiring stories of children. It is followed by an inspirational message from Mr. P. Balaji and Dr. Nilay Ranjan. इस एडिशन में पिछले कुछ कठिन वर्षों के बाद वीर हर किसी की खुशियों की कहानियों के बारे में बात करता है। Important values of saving money, respecting and helping elders through creative poems are showcased here. इस पुस्तक में पहेलियों और प्रश्न बनाने जैसी रोचक गतिविधियों को भी जोड़ा गया है।
जिससे सीखना और भी रोचक हो जाता है और आकर्षक बन जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं, दिस इज द सेकेंड एडिशन ऑफ वीर की कहानियां। आज के दिन में वी वुड ऑल्सो लाइक टू रिलीज अ स्टोरी बुक। आइए उस स्टोरी बुक को भी देखते हैं। अ स्टोरी बुक विच इज चलो मेरी स्टोरी पढ़ें, which is a collection of short stories written by members of community learning centers of Moini Foundation in 3 states of India. And we have the launch screen with us. तो ये है हमारी आज की स्टोरी बुक। लेट्स टेक अ लुक एट द स्टोरी बुक इन डिटेल कि किस तरीके की कहानियां जो हैं वो यहाँ पे डाली गई हैं। This book has been created using prompt 2, which are story prompt cards. स्टोरी प्रॉम्प्ट कार्ड्स का यूज करते हुए इस पूरी किताब को बनाया गया है। ये जो कार्ड्स हैं ये बेसिकली लैंग्वेज इनहैंसमेंट टूल्स होते हैं, गेम्स होते हैं, जिनको लिमिट किया गया है टू नॉट जस्ट किड्स बट दे आर आल्सो मेंट फॉर अदर एज ग्रुप्स एज वेल, दैट आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू children but also can be read by many adults and other age groups as well. The cards have been categorized as per characters, objects, places, situations and are bilingual also. इस पुस्तक में विभिन्न प्रेरक और रचनात्मक कहानियां हैं जो समुदायों और शिक्षाओं और नैतिक मूल्यों को कवर करती हैं, जैसे कि द मैजिकल सिटी, क्लीनिंग वर्कर, अ ट्रिप टू ताजमहल एंड मेनी मोर। So this was a book, चलो मेरी स्टोरी पढ़ें. We would like to mention here that the links of both the books, the second edition of वीर की कहानियां and चलो मेरी स्टोरी पढ़ें, these links are being shared in the chat and they are available for everyone to download as well. Please do download these books and take a read at them and have engaging and interesting experiences. हमें उम्मीद है कि ये कहानियां हमें अपनी उम्र के बावजूद अपने समुदायों में हर संभव तरीके से योगदान करने के लिए प्रेरित करेंगी। जी, we would now like to invite our young achievers for the certificate distribution ceremony. Each one of them had outstanding success in various spheres and we is proud to be associated with them. We would first like to invite the students of English School, Kolhar Budruk, Ahmednagar, Maharashtra, who participated in the Azadi Sat program. On 7th August 2022, Indian Space Research Organization ISRO launched Azadi Sat, which is carried 75 payloads that were developed in 75 schools across India. 10 students of English School were one such batch that designed a payload that was taken to space by Azadi Sat. The students were also invited by ISRO to witness the launch of the satellite at Sriharikota, Andhra Pradesh. We would like to felicitate these girl students who made this outstanding contribution. जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे साथ ये बच्चे जो हैं जुड़े भी हैं. We have with us on one screen from Ahmednagar all these 9 students who have made this tremendous outstanding contribution. We have Vidya, Shraddha, Siddhi, Sanjana, Avanti, Kartiki, Sakshi with us. और ये सभी बच्चे अहमदनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया है हमारे नेशन के लिए। इसरो के द्वारा इनको इनवाइट किया गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में आजादी सैट को जब लॉन्च किया गया था तब, और इन सभी बच्चियों ने ही पेलोड भी क्रिएट किया है। Many congratulations students on your success with the program. We are sure that you have a wonderful experience being a part of your journey and we hope that you had a wonderful experience being a part of this program too. Congratulations once again. Going forward, next we would like to invite Aditya Chaurasia. Aditya Chaurasia has received National Level Award in Drawing. Can we have the certificate of Aditya also? सभी बच्चों के हमारे पास सर्टिफिकेट भी खुलते जा रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं।
जी बिल्कुल। ओके, तो लेट्स क्विकली सी, अगर आदित्य ने हमें ज्वाइन किया है तो हम आदित्य को भी फेलिसिटेट करना चाहेंगे। ओके, फिलहाल गोइंग नेक्स्ट, आई थिंक आदित्य जो है वो अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, बट वी वुड ऑल्सो लाइक टू फेलिसिटेट सुहानी जामरे, who is the winner of, she's a gold medalist in judo at state level. Suhani, warm welcome. Can we have the certificate of Suhani? Yes, ma'am. जी थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए आज। Thank you, ma'am. जी ओके, इसी के साथ साथ वी वुड ऑल्सो लाइक टू इनवाइट रेणुका गुप्ता, हु हैज पार्टिसिपेटेड एट इंटरनेशनल लेवल इन योगा। रेणुका, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you, ma'am. मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस रेणुका, आपने हमारी कंट्री को प्राउड किया है और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से आपने जैसे इंटरनेशनल लेवल पे योगा में रिप्रेजेंट किया है कंट्री को, हम चाहेंगे आप आगे भी आने वाले समय में कई सारे इस तरीके के अवार्ड्स और जीतें और इंडिया को और प्राउड करें। थैंक यू सो मच Thank you, ma'am. हमारे साथ जुड़ने के लिए। We would also like to invite Ankita Mishra. Ankita Mishra has won national level in 800-meter race. 800-meter race में वो national level पे participate किया है उन्होंने और वो जीती भी है. She has also won a recognition at national level. तो quickly देख लेते हैं अगर अंकिता हमें join कर पाई हैं। जी ओके, सो अंकिता को भी हम वी फाउंडेशन के ओर से congratulate करना चाहेंगे। Many many congratulations अंकिता for your outstanding contribution. We also would like to congratulate many other students from Manipur, Maharashtra, and other states who have excelled in the field of swimming, ball badminton, kho-kho, fencing, throw ball, and science and technology. We Foundation will also be dispatching certificates to the students of the remaining 15 students after the event. सभी बच्चों के सर्टिफिकेट्स को डिस्पैच किया जाएगा उनके स्कूल्स में और हम एज अ होल एज अ टीम जो है सभी बच्चों को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं और फेलिसिटेट करना चाहते हैं। सभी बच्चों ने जहाँ पे अलग अलग स्फीयर्स में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो एजुकेशन का स्पेस हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, इन सभी बच्चों ने बहुत आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इन डाइवर्स डोमेन्स में किया है। एंड वी एज अ ऑर्गेनाइजेशन वुड वांट टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू हियर टुडे। We also congratulate all our awardees and thank them for the passion, discipline, hard work, and persistence that allowed these successes to come to them. हमें यकीन है कि ये सब बच्चे और वे सभी जो हमारे शो में हैं, जैसे जैसे बड़े होंगे अपने और देश के लिए ऐसे ही प्रशंसनीय कार्य करते रहेंगे। Before we end today's program, we would like to wish each one of you a happy Children's Day. There is always a child alive in each one of us. We hope as we celebrate this day with our young friends here, we all find more reasons to bring out that child and keep that child alive always. आज हमसे जुड़े सभी बच्चों को हम उनके आसपास की दुनिया में बदलाव लाने और उनके विचारशील प्रयासों के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। हम आशा करते हैं कि आप सभी इस दिन का भरपूर आनंद उठाएंगे। And once again, on behalf of We Foundation, we would like to wish all of you a happy Children's Day 2022. Stay healthy and stay safe. Thank you for joining. Thank you very much. Thank you, everyone. Happy Children's Day. Thank you, everyone.